Assalamu alaikum ji. This is not any kind of lake or a nadi. This is a road. Yeah, this has been wiped out. The water came from here and all the way damaging these roads, like wiping them off from this place and taking them in the fields. And the whole village has been destroyed. There are multiple houses. If you can see, there are a few tent houses in front of you, and the road is damaged. Plus there are multiple houses. I was telling you that they are like after every in isolation, like 4 houses, 3 houses, 2 houses in isolations. So this is kind of a very big disaster. This road, it's been 10 days and this road has not been repaired or made any external or alternative way to this village. There is a village in front of us. It's called Odki village, and it's completely destroyed because of the water, but it's not been accessible by anyone, not even the government, not by any welfare organization like us. But we are trying our best to reach there from another you can say direction. We hope that we will reach there. And if you can see, this is the main road which comes from main coastal highway, and look at the road. And this is the same situation of the coastal highway as well, but obviously it has been repaired, or you can say it has been given an alternate route. So yeah, these are all the problems. And a road, this goes from this cut till the start of that bridge. That is the bridge. Uske niche drainage hai, that's why it's still usable, or you can say it's still there, because iske niche koi drainage system nahi tha. इस वजह से ये पूरा रोड पानी के साथ बह चुका है. आगे ओडकी विलेज है. हमने दूसरी साइड से कोशिश की थी, आपको बताया था कि हम ट्राई करेंगे रीच आउट करने की, लेकिन सिचुएशन वही है कि इस तरफ से भी गाड़ी जाना तो नामुमकिन सी बात है. सिर्फ इनफैक्ट बाइक भी नहीं जा सकती है. आप मेरे लेफ़्ट और राइट के ऊपर देख सकते हैं कि बाइक जाना भी मुश्किल है. पीपल आर ओनली कमिंग फ्राम दीज विलेजेस टू द कोस्टल हाईवे साइड ऑन फुट एंड टेकिंग द जो भी इनको राशन मिल रहा है, कुछ भी मिल रहा है. इंशाल्लाह हमारी पूरी कोशिश है कि इन तक हम कल या परसों तक पहुंच जाएं, इनके विलेज के अंदर, और उनके जो विलेज में नुकसान है वो भी आपको दिखाएं. एंड वी विल रियली वांट के हम किसी तरीके से इनको सपोर्ट कर सकें. टू बी वेरी ऑनेस्ट, दिस इज़ अनबिलीवेबल. मैं ख़ुद यहाँ पे हूँ, लेकिन स्टिल अनबिलीवेबल कि ये पूरा आगे रोड नहीं दिख रहा. टू बी वेरी ऑनेस्ट, आगे रोड नहीं दिख रहा. एंड अगर मैं आपको जूम करके दिखाऊँ तो भी, इसके बाद भी अगर आप देखें तो रोड नहीं है. एंड इफ़ यू सी ऑन दिस साइड देयर इज़ अ लिटिल पैच ऑफ रोड जो कि स्टार्ट, सो इट्स ऑलमोस्ट अराउंड 1 और उससे 2 किलोमीटर्स जो कि बिल्कुल ही जो है वो गायब है. एंड इसके आगे वादी मौजूद है जो कि परेशान है. और वी विल एनकरेज एवरीबडी टू सपोर्ट these people, our brothers and sisters in distress, and make their lives a little bearable.